The 7-hour-long marathon meeting between top government ministers Narendra Tomar, Piyush Goyal and over 30 farmer unions yesterday failed to break the deadlock, though many farmer leaders did say that it was a step forward. Farmer leaders have reiterated the government to withdraw the new laws and make the minimum support price a legal guarantee. Another round of talks has been scheduled for tomorrow. The government, we learn, is willing to consider allowing judicial recourse for farmers. The current grievance redressal mechanism leaves the final word with the subdivisional magistrate, which removes the jurisdiction of the civil courts. Joining us now from the Delhi-Haryana Singhu border, one of the epicenters of the farmers' protest is our colleague Ashmit Kumar. Ashmit, ahead of that meeting tomorrow with the government, farmer organizations discussing what transpired at the meeting overnight and what I would imagine is negotiable and what is non-negotiable. Now, as far as MSP is concerned, it's very clear farmers are not willing to accept a resolution. They want a legal guarantee. And the government seems to be inclined to review the grievance redressal mechanism. What's the sense that you're getting on what is going on at this point in time in that meeting that's currently underway, farmer leaders meeting? Well, as of right now, from what we understand is that the farmer leaders are in a huddle. They are at the Singhu border. They're having this meeting at a discrete location about 4 kilometers inside the barricaded area. What the issues that they're deciding essentially over is the position that they will take in the meeting that is scheduled for tomorrow with the government at Vigyan Bhavan. They're deciding on a number of issues. Let's make a few things clear. The government on its part has said that there is no question of repealing the 3 laws in question. But having said that, they have provided room for making a few amendments, such as providing for civil courts. Currently, the grievance redressal mechanism is such that it requires an appeal to the SDM and then the collector. There is no civil court in the current procedures. The second amendment that the government perhaps can also look to provide is perhaps providing parity between private trading outside the APMC as well as on the APMC mandis, to provide parity in terms of the applicable taxes, the rural development cess, the market tax that is currently charged, for there to be parity so that there is faith in the current system that it won't be, the APMC system will not be eroded. That is the fear that farmers in fact are currently dealing with. On that note, in fact, let's go across to a few farmers who are in fact participating in this meeting and trying to develop consensus on the way forward. सर, अगर आप पे ये बात आए, अभी चर्चा चल रही है इस बात पे कि आगे बढ़ के ये मुद्दा, इसमें 2-3 इश्यूज रह जाते हैं. सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि एमएसपी को कि 3 लॉज को रिपील करने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो अमेंड करने के लिए राज़ी हैं कि जो प्राइवेट ट्रेडिंग बाहर होगी मंडियों के बाहर और मंडियों में जो ट्रेडिंग होगी उसमें जो टैक्स लगेगा वो बराबर रहेगा, तो फार्मर सुरक्षित हैं और उनको डरने के लिए कोई वजह नहीं है. ये प्रपोजल आया है सेंटर की तरफ से, इसमें आपकी क्या राय है? जो ये 3 काले कानून लागू किए गए सरकार द्वारा लाए गए हैं, इनसे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा. मंडियां बर्बाद कर दी है, मंडियां बर्बाद हो चुकी हैं, कर देंगे बाकी रहती. खेती को बर्बाद करने का ये कानून एक किसान की मौत का वारंट है. अगर ये कानून लागू होता है तो कोई किसान बचेगा नहीं. इसी कारण ये इतना किसान करोड़ों की गिनती में उठ के आ गया. अभी तक सरकार को नहीं समझाए तो हम क्या करें? सर, सरकार अपनी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. वो कह रहे हैं कि अभी किसानों को इस बात का डर है कि हमारी मंडियां कमज़ोर हो जाएंगी क्योंकि मंडियों पे टैक्स लगता है और इस कानून के अंडर बाहर जो हम बेचना होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा. सरकार कह रही है कि हम किसानों को आश्वस्त करने के लिए हम दोनों जगह, मंडियों पे भी और मंडियों के बाहर भी सेम टैक्स लगाएंगे, तो ऐसा डरने की कोई वजह नहीं रहेगी किसानों के पास. क्या किसान इस बात से खुश हैं? क्या वो इस बात को अप्रूव करेंगे? हमारे साथ वादा किया गया था, डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, फसल का पूरा रेट देंगे. वो कहाँ है? अब विश्वास कैसे करें? पहला वाला तो जुमला बता दिया, अब वाला जुमला बता दिया, तो क्या करेंगे किसान? आप कह रहे हैं कि अभी विश्वास करने में थोड़ा तकलीफ है. नारवाल जी, आपके पास आऊँगा. आप हरियाणा से हैं, आप यहाँ पे हरियाणा की तरफ से आप पंचायतों को, आप किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आपसे सवाल करूँगा कि एक आश्वासन जो सरकार की तरफ से आया है कि इसमें अभी कानून में कोर्ट नहीं है, इसमें आप ये है कि आप प्रावधान है कि आप SDM के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए. ये जो दावा सरकार की तरफ से आया है, प्रपोजल आया है, क्या इस बात से किसान कुछ हद तक खुश होंगे कि वो प्रोटेस्ट रिकॉल करें कि हम एक सिविल कोर्ट्स के लिए एक प्रावधान लेके आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार ने 2 कदम पीछे लिए हैं,
इसका मतलब पहले तो सरकार कहती थी कि इनके बहुत सारे फायदे हैं, एक नया क्रांति आएगी किसानों के जीवन में, सरकार ये कह रही थी। अगर अब सरकार पीछे कदम क्यों हटा रही है? सरकार कह रही है कि सिविल कोर्ट में भी जाने देंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियां थी। अब तो सरकार भी खुद स्वीकार कर रही है, सरकार ने स्वीकार किया तभी तो उनको पीछे कदम लेना पड़ा। इन कानूनों में इन चीज़ों के साथ साथ और भी बहुत सारी खामियां हैं। जब तक ये कानून पूर्ण तरीके से बैक नहीं होंगे, जब तक ये कानून पूर्ण तरीके से खारिज नहीं होंगे, तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, आप कह रहे हैं कि जब तक ये कानून पीछे नहीं हटेंगे, कल जो सरकार की तरफ से प्रपोजल आया है और आज जो मीटिंग हो रही है अभी किसानों के लीडर के बीच में, क्या ये हम माने कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो सरकार जो यहाँ पे जो किसान के लीडर हैं उनकी पोजीशन वही रहेगी कि कानून जब तक वापस नहीं लेंगे, ये प्रोटेस्ट जो हम देख रहे हैं कई किलोमीटर लंबा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल ऐसा का ऐसा ये प्रोटेस्ट रहेगा। ये कानून जब तक पीछे नहीं होते हैं और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता है, ये दो चीज़ जब तक नहीं होती हैं, प्रोटेस्ट ऐसे ही रहेगा। इतनी दूर से जो पंजाब से किसान चल के आए हैं, हरियाणा के गांव-गांव से इतना सामान आप देख सकते हैं, राशन सा पूरी व्यवस्था है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतनी दूर से हम इन कानूनों में अमेंडमेंट करवाने नहीं आए थे, हम इन कानूनों को पूर्ण तरीके से हटाने के लिए आए थे और हम आज भी उस बात पर रिजिड हैं। सर एक सवाल बस आपसे आखिरी पूछूंगा कि ये मीटिंग जो है सुबह 12 बजे शुरू हुई थी, अभी 4 बज रहे हैं, 4 घंटे से चल रही है मीटिंग। अगर इसी बात पे अमल हैं सब लोग कि ये प्रोटेस्ट हटेगा नहीं जब तक हमें एमएसपी नहीं मिलती, तो ऐसी किन बातों पे और चर्चा की जा रही है जो आप सरकार के साथ कल उठाएंगे विज्ञान भवन में? बहुत बातें होती है, जैसे यहाँ सफाई का प्रबंध नहीं, लैट्रिन का प्रबंध नहीं, वो कौन करेगा, इन बातों पे भी चर्चा हुई है। जो हमारे इधर उधर के किसान, यहाँ दूसरे स्टेटों के किसान काम आए थे, 2 नाके खुले हुए हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, आंदोलन को और कैसे मजबूत किया जाए, ये सभी बातों पे मीटिंग हो रही है। और मीटिंग में कोई एक आदमी नहीं, 40-50 से नहीं 100 आदमी से ऊपर मीटिंग में बैठे हैं और आते हैं जाते हैं। कम से कम 250 संगठन आज मीटिंग में अपने विचार रखेंगे। तो बातचीत अभी हो रही है कि ये प्रोटेस्ट कैसे और आगे बढ़ाया जाए, पर इसको अभी पीछे हटाने का कोई सवाल नहीं है। So that is the kind of consensus that we're getting after speaking to a few farmer leaders. What they tell us is that there is no backtracking, at least on their part. They're very, very clear that there will be no going back from here. The protesters are here to stay. It will only get stronger. That is what they're driving home at. And that tomorrow when they go back to the government, their demand will again be renewed for a legislative guarantee for the MSP or either a repeal. These are the two options they're giving. They're not very impressed by the look of things with the two proposals for amendments. They're not very impressed with that. It has not managed to cut any ice. We're yet to see. They will host a press conference a while from now when we can expect a more formalized version from the farmer leaders. But for now, clear consensus developing that the proposal for the amendments has not managed to cut any ice, and the protest, they say, will only grow stronger from here. With that, it's back to you. Ashpit, many thanks for joining us there from the Singhu border. Nitisha Kashyap joins us live from the Ghazipur border. Nitisha, farmer leaders meeting there as well. What is the latest? Well, Shireen, the farmer leaders meeting have already concluded here. In fact, it's Rakesh, one of the farmer leaders, Rakesh, he is the one who was conducting the meeting here. They are the farmers who are mostly from the western UP, and they have said that they are giving full support to the farmers who have come from Punjab, and they are going to sit in here and they are going to do a sit-in protest here till the time there is some conclusion from the meetings that they are constantly holding with the government. In fact, they have said that there is not going to be any kind of compromise with their demands, and therefore the constant meetings are happening. Yesterday also a meeting happened, and again tomorrow a meeting is scheduled at around 2 o'clock. They are saying that they will their demands are not going to be compromised, and the government have to listen to all of those. Then only they are going to vacate the borders. In fact, remember that at Singhu and Tikri they are completely sealed. I am standing at the Ghazipur border where it is partially sealed. So I am standing on the carriageway which
which connects Ghaziabad to the national capital, and on this particular stretch the farmers have taken over all over the place, and there are multiple barricades that have been put by the security officials so that these farmers do not cross the barricades and enter the national capital. They have been given a designated place called Nirankari ground in Burari, but they have refused to go there because they have said that unless and until their demands are met, they are going to occupy this Ghazipur border. And at Ghazipur, they are the farmers who have come mostly from the western UP. Okay, all right, Nitisha, many thanks for joining us from the Ghazipur border. Farmers protesting there, mostly from western UP, as Nitisha is pointing out. And the farmers' protest is also turning into an international diplomatic issue between India and Canada. Just days after Canada's Prime Minister Justin Trudeau expressed concerns over the protests and vowed to defend the right to protest peacefully, India has hit back, calling Trudeau's comments unacceptable. The External Affairs Ministry has summoned the Canadian High Commissioner Parikshit Luthra, standing by with more. Parikshit, take us through the MEA's response. Well, there's been a very strong response from the Ministry of External Affairs. It's very rare for the government to actually name a prime minister in a démarche, but this is what exactly has happened. After Justin Trudeau said that he is concerned about the situation of farmers in India, the Indian Ministry of External Affairs, the Foreign Ministry, has gone on to say that Canada's interference in India's internal affairs is absolutely unacceptable. This could seriously damage ties between India and Canada. They've also said that this has led to protests by extremist groups outside the Indian High Commission and consulates in Canada as well. And they would urge the Canadian government to ensure the security of Indian diplomatic staff in Canada. They've also gone on to say that in future, Canadian leaders, the Prime Minister, the Cabinet and diplomats must refrain from any kind of statements that legitimize extremist activities. So very strong words and a very strong démarche summoning the Canadian envoy to Delhi today. All right, Parikshit, many thanks for joining us. We will take a break, but coming up next, India needs a cost-effective COVID vaccine, says the Prime Minister, after an all-party meeting. Adds the centre is talking to states over the price of the vaccine. So, A, universalization of the vaccine in question. B, free vaccination. That is also an issue in question. That and more when we return.